पहले हम 11.7 की एक लाइन को ड्रॉ करेंगे। स्केल को ज़ीरो से ही लेंगे हम, यहाँ से 0 से लेके 11.7 057 11.7 यहाँ से लेके यहाँ तक मार्क को हम ज्वाइन कर देंगे। जैसे यहाँ पर 11.7 लिया है, यहाँ पर भी सेम हम 11.7 की एक लाइन को ड्रॉ करेंगे। यहाँ से हम लेंगे 8, 0 से ही स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर 8 लेंगे यहाँ तक। इसको हम लाइन को ड्रॉ कर देंगे और यहाँ से भी सेम 11.7 की ही लेंगे। एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेंगे। हमने एक रेक्टेंगल को ड्रॉ कर लिया। ये है 11.7, ये है 8, ये है 11.7 और ये है 8। अब हम यहाँ सेंटर से लेंगे 5.3, सेंटर से 5.3 यहाँ पर एक मार्क लगा लेंगे और एक लाइन को ड्रॉ करेंगे। यहाँ से इस पॉइंट से हम लेंगे 1.3, 0 से स्केल को रखेंगे और यहाँ से 1.3 पर एक मार्क करेंगे और लाइन को ड्रॉ कर लेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक। यहाँ से लेके इस पॉइंट से स्केल को रखेंगे 0 पर और यहाँ से लेंगे हम 2। इस लाइन पर हम स्केल को रखकर 0 से लेकर 2 तक एक लाइन को ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ से इस लाइन से हम 0 पर स्केल रख कर लेंगे 0.7। अब यहाँ पर एक लाइन को ड्रॉ कर देंगे। इसके बाद अब हम इस लाइन से यहाँ पर 0 पर स्केल रख कर लेंगे 1 और यहाँ पर भी एक लाइन को ड्रॉ कर देंगे। अब हम ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे।